In this module, we would be talking about one of the desirable property of a hypothesis, that is the relative efficiency. So my dear students, we would have to see the performance of a test as compared to other tests. So by definition, the efficiency of a test is basically the criterion for testing that how one pair of hypotheses that performs better as compared to the other. So this particular criterion is known as the efficiency. So the most frequently encountered index of efficiency for a non-parametric statistics is the asymptotic relative efficiency, and in short we call it as ARE. Now, how to compare the efficiency of one test as compared to the other tests? As my dear students, high efficiency for a particular test is the desired characteristic or the property. So students, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी दो टेस्ट लेके, टेस्ट ए एंड टेस्ट बी, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम कंपैरिजन एस्टैब्लिश करेंगे बिटवीन द टू टेस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस. सपोज टेस्ट ए रिक्वायर्स n1 observations to obtain a certain power beta. Now what is power beta? Power beta is defined as the probability of rejecting a false hypothesis. So if we take another test B, जिसमें हम n2 observations की बात कर रहे हैं, और हमें उस केस में भी, टेस्ट बी के केस में भी एक सर्टेन पावर अचीव करनी है. सो रिलेटिव एफिशिएंसी को हम फिर कैसे डिफाइन करेंगे? Relative efficiency of test A as compared to test B will be defined as n2 over n1. So basically it is the ratio of the two sample sizes in the corresponding test. अब यहाँ स्टूडेंट्स आपको मैं बताती चलूं कि if you just look into the denominator, यहाँ पे अपीयर हो रहा है n1. Now what is n1? As I've defined earlier कि n1 जो है वो observations हैं A में. सो जिस टेस्ट को आप उसकी एफिशिएंसी को कंपेयर करने चाह रहे हैं किसी दूसरे टेस्ट के साथ, सो उस पर्टिकुलर टेस्ट को जिसकी आप एफिशिएंसी को कंपेयर कर रहे हैं उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट विल अपीयर इन द डिनोमिनेटर. और अगर आप देखिए तो न्यूमरेटर में आपको नजर आ रहा है n2. n2 are the total number of observations in the test B, which is a test जिसके साथ आप A को कंपेयर कर रहे हैं. एक एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी. सपोज दैट टेस्ट बी रिक्वायर्स 50 ऑब्जर्वेशंस टू अचीव अ पर्टिकुलर एफिशिएंसी. सो एफिशिएंसी इज प्री डिफाइंड फॉर दैट मैटर कि आपको 70% एफिशिएंसी रिक्वायर्ड है फॉर अ टेस्ट, एंड टेस्ट ए रिक्वायर्स 25 ऑब्जर्वेशंस टू अचीव द पर्टिकुलर एफिशिएंसी. नाउ द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ टेस्ट ए with respect to test B will be simply the ratio of the two sample sizes. जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जिस टेस्ट को आप कंपेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमारे केस में A है, उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिनोमिनेटर में आएंगी, जबकि जिस टेस्ट के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं विच इज टेस्ट B इन आवर केस, उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल अपीयर इन द न्यूमरेटर. सो द रिजल्टेंट आंसर इज 2. अब ये 2 क्या हमें डिटरमिन कर रहा है? हम क्या 2 वैल्यू से इन्फर कर रहे हैं स्टूडेंट्स? इट इज बीइंग इन्फर्ड दैट टेस्ट ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज कंपेयर टू टेस्ट बी. सो स्टूडेंट्स, इफ वी हैव ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ टेस्ट, सो वी कैन मेक अ कंपैरिजन विद इन द टेस्ट by means of calculation of this relative efficiency. So relative efficiency would guide us that which test outperforms as compared to the other test.